Welcome to Vanik Aso class, especially the Odisha Polity class time number. Odisha Polity substantial part Aso recovery pare. So हमें देखिए कारण जो टाइम कम अच्छे हम पाकरे हमें shortly जीवा. But before starting the class, let me tell you, I will focus on the important parts. Odisha Polity ये बहुत सारा जिनिस अच्छी बट हमें ताको डिटेल न जाएगी किछटा important part देखिबा. First of all, keep in mind कि Odisha Polity जोटा हमें कहूचे सेटा Indian Polity रो सब part जोटा हमें Constitution ने पढ़ी state part, state legislature, state executive, local self government same part. कारण same parliamentary system में adopt होईची, जहाँ adopt करा जाईची. केवल हमें किसी basic point देखिबा तारी पर फोकस करिबा. स्टार्ट करिबा. प्रथम तो तुम्हें मन रखिबो कि ब्रिटिश before British there were many leaders, many rulers. एवं ओडिशा एंशिएंट टाइम रे चारिटा पांचटे ना रे जଣା थिला जोटा कि हमरा कलिंग, ओड्र, ओके, कंगोद, कोशल and कंगोद, कोशल, उत्कल एवं महाभारत रे the name of Kalinga is inscribed. ओड्र ना भी inscribe होईची. बाकी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारा पुराण रे ओडिशार एंशिएंट ना गुडा सब लिखित अच्छी. माने ओडिशा गोटे एंशिएंट लैंड एवं एंशिएंट समय एंशिएंट हिस्ट्री जोटा आम कहूचे ओडिशार इट स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट कलिंग वार जोटा 261 BC रे हेतिला. सेइटू रेकर्डेड हिस्ट्री आरंभ होईछि. क्वेश्चन पचारि पारे कि ओडिशार रेकर्डेड हिस्ट्री को समय आरंभ होईछि. मन रखता कि सेटा कलिंग वार 261 BC रु आरंभ होईछि रेकर्डेड हिस्ट्री. सेइटू हमर इतिहास अछि. एवं कलिंग जो हमर अछि कलिंग वार विषय रे अशोक तांकर केतेतम एडिक्ट रे लिखिथिले. इट इज 13th एडिक्ट रे. 13th रॉक एडिक्ट तांकर गोटे थिला शिलालेख रॉक एडिक्ट जोटा कि पाकिस्तान रो शाहबाजपुर गंज बा शाहबाजगंज पाकिस्तान रो शाहबाजगंज रे रॉक एडिक्ट रे कलिंग ना उल्लिखित थिला. सो कलिंग वार परे मौर्य तापरे चेदी जोटा खारबोल डायनास्टी फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी बेलू ओडिशा को शासन करथिला. खारबोल परे इतिहास ओडिशा इतिहास अंधकार को पड़ैथिला. एवं हुएनसांग स्टेटमेंट टोलेमी हुएनसांग जो ना शुणिथिबो सब चाइनीज परिव्राजक ट्रावेलर्स सी मध्य तांकर ग्रंथरे ओडिशा ना उल्लेख करथिले. तापरे सोमवंशीज, पांडुवंशीज, तापरे बहुत सारा रूलर्स माने ओडिशा को शासन करथिले. केसरी वंश एवं गंग वंश लास्ट गंग थिले
एवं केसरी समय जजाति केसरी लिंगराज मंदिर तैयारी करते गंगवंश चोड़गंग अनंत बर्मण चोड़गंग देव जगन्नाथ मंदिर स्टार्ट करते एवं तापरे गंगवंश एंड रे जोटा 1568 रे राजा मुकुंद देव कर डेथ होता एवं तापरे ओडिशा स्वाधीनता हरैतिला लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस तापरे मुगल माने किछि दिन कोस्टल ओडिशार किछि पार्ट को शासन करथिले तापरे मराठा माने आस्थिले तापरे ब्रिटिश आसिला तेना हमर पॉलिटी पार्ट ब्रिटिश रु स्टार्ट हबो 1803 रे ओडिशा ऑक्युपाई कला एटा मन रखिबो एवं सेतबेले ओडिशा तीनोटी डिवीजन रे तीनिटा एरिया रे थिला कटक बालेश्वर पुरी जोटा अनडिवाइडेड पार्टा सेटा थिला ओके बाकी अन्य पार्ट उरा प्रिंसली स्टेट्स थिला ओके बाकी ओडिशा रो अन्य पार्ट जो जेंति रहिला हमर गंजाम हैला कि अन्य सर्दर्न पार्टा मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला एवं संबलपुर आ एडजॉइनिंग पार्ट्स रो सेंट्रल प्रोविंस अंडर रे थिला तेणु ओडिशा एमती डिवाइडेड होगी सेमती यूनाइटेड नथिला ठीक अच्छे तापर आम देखा ओडिया मूवमेंट जोटा आरंभ है ओडिया भाषा प्रथम बा ओडिया भाषा कथित जो ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्स गुरा थिले ताकू एकत्रित करने ओडिया भाषा आंदोलन आरंभ होता एवं 1866 मसीहा रे जोटा 9th रेगनाल रे नौंक दुर्भिक्ष जोटा आम कौचे सेटा टर्निंग पॉइंट थिला कारण से ता परठू ओडिया लोक माने ओडिशा को स्वतंत्र राज्य बा स्वतंत्र प्रदेश करिवार आइडियाटा जर्मिनेट हला तेणु 1866 टा टर्निंग पॉइंट थिला हम पई दैट इज नौंक दुर्भिक्ष महाराजा दिव्यसिंह देवंकर नवम वर्ष रे से 9th ईयर रे द फेमिन होती नौंक दुर्भिक्ष कहुला एवं तुम्हें जानी बोधे कि नौंक दुर्भिक्ष 1/3 लोक ए मृत्युवरण करते ओडिशार पाखापाखि 10 लाख लोक मृत्युवरण करते एवं सेतबेले जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल थिले सेटा गोटे मन रखिबो जॉन लॉरेंस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया when नौंक दुर्भिक्ष बा 9th फेमिन स्ट्रक एवं तापरे 1875 रे राजा सामानंद देव बालेश्वर मधुसूदन दास कटक एमाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गोटे मेमोरांडम देथिले ओडिया भाषा कथित एरिया गुड़ा को ओडिया स्पीकिंग स्कैटर्ड ओडिया स्पीकिंग टेरिटोरी को यूनाइट करिया ओके बहुत सारा काम होईची सेतबेले एवं 1902 रे राजा वैकुंठनाथ देव बालेश्वर आल्सो सबमिटेड मेमोरियल ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन एरटी देखिथिबो बाकी 1862 रे संबलपुर एंड एडजेसेंट इंक्लूडेड इन सेंट्रल प्रोविंस रे परिणत हैला एवं पार्ट ऑफ नेचुरल ओडिशा ग्रेरिसन सर्वे एंड ओडिया कंट्री एंड गवर्नमेंट रेकॉर्ड्स रे ओडिया नाटा इंक्लूड होता आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखिबो हिंदी वाज इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रल प्रोविंस रे संबलपुर एरिया रे 1 जनवरी 1986 रे इंट्रोड्यूस होता हिंदी लाइक इन 1905 रे ओडिशा रे ओडिया भाषा इंक्लूड कराइतला इम्प्लीमेंट कराइतला किंतु 1 जनवरी 1896 रे संबलपुर एरिया उडे हिंदी भाषा प्रवर्तन कराइतला ए डेटा मन रखियो 1896 तापरे गोटे रिजले सर्कुलर बोली गोटे सेतबेले साइमन रिजले जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले सी संबलपुर रीजन रे ओडिया भाषा प्रवर्तन करिया पई गोटे सर्कुलर आनते ताकू रिजले सर्कुलर कह जाउथला जोटा कि संबलपुर एवं एडजॉइनिंग प्रोविंसेस गुरा ओडिशा रे मिसिया पई गोटे सर्कुलर आस्ते ओके एंड से समय ओडिशा बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला सो 1905 टा इंपोर्टेंट अछि संबलपुर टू बी ए पार्ट ऑफ ओडिशा डिविजन्स ओके देन
1st April 1912 रे 1st April 1912 रे Bihar got separated from Bengal presidency. Bihar and Odisha, and Bihar and Odisha province was created on 1st April 1912. Okay, and it was detached from Bengal. एवं से समय लॉर्ड हार्डिंस भारतर भाइसरॉय थिले से समय ओडिशा और बिहार गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बेंगल प्रेसिडेंसी बेंगल प्रोविंस लॉर्ड हार्डिंस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके देन गंजाम और भाईजाग एजेंसी रिमेन्ड अंडर मद्रास ओके सो दैट इज द थिंग्स नाउ उत्कल सम्मेलनी उत्कल सम्मेलनी was established in 1903 by Madhusudan Das and other prominent leaders. उत्कल सम्मेलनी तैयारी होबार कारण थिला कि नेशनल कांग्रेस बा इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट वर्क फॉर ओडिया इंटीग्रेशन ऑफ ओडिया टेरिटोरीज से उत्कल सम्मेलनी को गोटे प्लाटफर्म हिसाब से तैयारी कराइथिला एवं एई उत्कल सम्मेलनी एसोसिएशन बा उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस टा ओडिया टेरिटोरी मानक मिसेबा गोटे विधिबद्ध भाव में प्रचेषा आरंभ करते सो मधुसूदन दास वाज द मोस्ट डायनामिक स्पिरिट 1903 टा मन रख 1903 रु 1920 भितर उत्कल सम्मेलनी मोस्टली एक्टिव थिला ओके नाउ द रिफॉर्म कमिटी रिकमेंडेड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गोटे रिफॉर्म कमिटी हितला से ऑटोनॉमी ओडिशा को स्वाधीन करने करा ओके एंड ग्रेजुअली बहुत सारा लोक गोपबंधु दास मधुसूदन दास राजेंद्र नारायण भंजदेव हरिहर पंडा एमान सबू मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड जो मॉन्टेगु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे मेमोरांडम देते 1920 मसीह एवं 1920 पर ओडिया भाषा बा ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट यूनिफिकेशन आंदोलन जोर धरता एवं एटा मन रखियो कि सच्चिदानंद सिन्हा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला हमर दैट इज दिल्ली रे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली रे जो बसुतला सेठी सच्चिदानंद सिन्हा जी जन मेंबर थिले से 1920 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख रे ट्रैक्सुरा बा ओडिया भाषा कौथिबा अंचल को एकाठी करिया पई गोटे रिजोल्यूशन आनथिले ओके तापरे गवर्नमेंट ऑफ मद्रास गोटे जॉन फिलिप और डॉफ कमिटी गोटे अपॉइंट करथिला 1924 मसीह दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट 1924 रे फिलिप डॉफ कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द मद्रास गवर्नमेंट एवं फिलिप डॉफ कमिटीटा गंजाम बा अन्य अंचल को ओडिशा सहित मिसा जीव कि नहीं से अपॉइंटमेंट कराइला 1924 रे फिलिप डॉफ कमिटी तापरे साइमन कमिशन ओडिशा को आसते साइमन कमिशन आगरे महाराजा कृष्णचंद्र देव एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स दे मेड सम डिमांड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स एवं सी साइमन कमिशन निर्देश रे सीआर आटली कमिटी गोटे तैयारी कराइथिला सीआर आटली सब कमिटी सीआर आटली कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1930 रे सीआर आटली कमिटी गठन होइतिला एवं सीआर आटली कमिटी रे केते जन मेंबर थिले डॉक्टर ए सुरवाड़ी राजा कनिका राजेंद्र नारायण भंजदेव एंड लक्ष्मीधर महांती ए 3 जन थिले चेयरमैन ए मेंबर थिले एवं सीआर आटली थिला तार चेयरपर्सन्स एवं कमिटीटा गठन होइतिला टू कंसीडर द यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स सीआर आटली कमिटी एटा साइमन कमिशन को कथारे कराइतिला एवं सीआर आटली कमिटी कहले कि ओडिशा डिवीजन कहले कटक पुरी बालेश्वर आउ अनुगुल खरियार गंजाम आउ एजेंसी ट्रैक्ट्स जो भाईजाग एजेंसी अंडर जो अंचल गुरा थिला सेगुरा मिसिकी ओडिशा तैयारी हो बोली से रेकमेंड करथिले कि सीआर आटली कमिटी
शेयर अटली कमिटी चार्टा एरिया को नहीं ओडिशा डिवीजन अनुगुल खरियार गंजाम एंड एजेंसी ट्रैक्स ठीक अच्छे तापरे साइमन कमिशन अंडर रे जिते बड़े शेयर अटली कमिटी आसला तापरे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एटा सेकेंड राउंड टेबल हम 1931 रे पारला राजा पारला खेमुंडी महाराजा गजपति कृष्णचंद्र देव सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे लंडन रे ओडिशा को यूनाइट करिया पे गोटे भाषण देते स्पीच देते एवं तांकरी स्पीच इम्प्रेसिव थिला एवं तांकरी स्पीच रा आधार रे ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे बाउंड्री कमिशन 1931 रे गोटे बाउंड्री कमिशन ओडिशा बाउंड्री कमिशन तैयारी करथिला सेटा क्वेश्चन आसी परे ओडिशा बाउंड्री कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैमुअल ओ डनेल एवं तार मेंबर्स माने थिले एचआर मेहटा टीआर फुकन एमाने थिले तार मेंबर आउ राजा पारला खेमुंडी ओडिया लोकों को रिप्रेजेंटेटिव करथिले कृष्णचंद्र गजपति देव एंड एसएन सिन्हा बिहारी लोकंकर आउ एन राजू बेली गोटे लोक तेलुगु लोकंकर एंकु नेकी गोटे बाउंड्री कमिशन कहउतला ताकू ओडिशा बाउंड्री कमिशन आमे कहि परिबा ठीक अछि ओडिशा बाउंड्री कमिशन एवं कमिशन रेकमेंड कौन कला ओडिशा बाउंड्री कमिशन कौन रेकमेंड कला ए सेपरेट प्रोविंस व्हिच वुड इंक्लूड ओडिशा डिवीजन बाउंड्री कमिशन कहला ओडिशा डिवीजन रहिबो जोटा आउ थरे कहूची पुरी कटक बालेश्वर अनुगुल रहिबो पदमपुर खरियार स्टेट ग्रेटर पार्ट ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट एंड भाईजागपट्टनम एजेंसी तो एतिक एरिया को रेकमेंड कला बाउंड्री कमिशन एवं टोटल एरिया 33,000 स्क्वायर माइल्स रही बोली कहला पॉपुलेशन 8 मिलियन 2,77,000 लोक रही बोली से रेकमेंड करता किंतु बाउंड्री कमिशन ओडिशा रे हाईकोर्ट निर्माण पई किबा यूनिवर्सिटी पई कोनोसी रेकमेंडेशन दे नथला तेणु बाउंड्री कमिशन ऊपर नजर रखिबो बाउंड्री कमिशन 1931 मसीह स्थापित होता एवं सीटा पाखापाखि तार रिपोर्ट देला परे 1933 रे से रिपोर्ट देले जोटा कि यही सब कथा से कहते तापरे गोटे जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट तैयारी करथिला जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी जोटा ओडिशा को एक स्वतंत्र भाषा बा स्वतंत्र राज्य भाव में गठन करने अनुमोदन करथिला तो सेतिपई जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी रिकमेंडेशन रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और सेक्शन 289 अंडर रे सेक्शन 289 अंडर रे सेक्शन 289 अंडर रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन 1935 रे स्पेशल प्रोविजन फॉर सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा कौ सेक्शन अंडर रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 रे ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश करिया पई अनुमोदन दिया जाइतिला सेटा होची सेक्शन 289 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे 321 सेक्शन थिला जोटा आर्टिकल्स आमे बे कहूचे एवं 10टा शेड्यूल थिला से सेक्शन 289 रे ओडिशा प्रोविंस कथा कहैतिला दैट इज इंपोर्टेंट तापरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन
सो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी तैयारी कराइतला ओके एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी तैयारी कराइतला 1932 रे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी तैयारी कराइतला तार काम थिला टू रेकमेंड मेजर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स फॉर ओडियास ओडिशा जो तैयारी हेबो तापै कोन कोन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रहिबो सेटा पई से गोटे कमिटी तैयारी करथिले 1933 रे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी इट वाज चेयर्ड बाय जॉन ऑस्टिन हबाक होचंती भारतर ए जो ओडिशा रो प्रथम गवर्नर तांकरी अंडर रे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी तैयारी कराइतो सेटा टी मन रखिबो 1933 रे से रिपोर्ट देले 20 डिसेंबर 1933 रे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिशन गोटे रिपोर्ट देले कि कौन कौन ओडिशा रे रहिबो ओके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमिटी कहला कटक शुड बी द कैपिटल ऑफ द न्यू प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन कहले कि कटक ओडिशा रो न्यू कैपिटल हवा दरकार एवं पूरी समर कैपिटल बा समर हेडक्वार्टर्स हवा दरकार ओडिशा रे गोटे हाईकोर्ट रहिबो बोली से कहितले किंतु कोनोसी यूनिवर्सिटी कथा से कहि नथिले हां आ गोटे जॉइंट ऑफिशियल कैडर विथ बिहार रहिबो प्रोविजन फॉर ए सेपरेट प्रोविंस वाज मेड इन गवर्नमेंट एक्ट कहली एवं सेही अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे ऑर्डर पास कले जो ऑर्डरटा 1 एप्रिल 1936 रे कार्यकारी हला एवं 1 एप्रिल 1936 दिन ओडिशा स्वतंत्र राज्य भाव में घोषणा करा एवं से समय बोर्ड रे लक्ष्य कर कौन कौन एरिया थिला 32,198 स्क्वायर किलोमीटर थिला एरिया पॉपुलेशन थिला 36 रे 87,08,554 ए दुटा डाटा मन रखिबो केते डाटा थिला केते पॉपुलेशन थिला एवं से समय केतेटा डिस्ट्रिक्ट थिला सेटा गोटे मेजर कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर गंजाम कोरापुट काइंडली टेक ए नोट ऑफ दैट सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ओके सो हम ब्रीफली जाऊे जेहेतु तुम पाखे समय कम अच्छी कौगुड़ा क्वेश्चन हो पार पॉसिबल गोटे दुटा 4-5टा क्वेश्चन आम देखुचे जोड़ा इंपोर्टेंट हो पार तेणु से मुझे तुमको कहूँ जमी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी किए चेयर थिला किंतु सेमती जो आमर कौन बाउंड्री कमिशन सामुएल डनेल थिला किए मेंबर थिला एगुड़ा टी नजर रखिबो एवं ओडिशार साइज केते थिला जियोग्राफिकल साइज 36 मसीह पॉपुलेशन केते थिला 36 मसीह को जिला गुरा 36 मसीह थिले सेगुड़ा देखियो एवं से समय गवर्नर जनरल इंडिया रे किए थिले जते ओडिशा स्वतंत्र राज्य हला सेटा गोटे इंपोर्टेंट लॉर्ड वेलिंगटन लॉर्ड जेटलैंड थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं से समय ब्रिटिश रो प्राइम मिनिस्टर थिले स्टानले बार्डविन एराटी इंपोर्टेंट अच्छी एराटी नजर रखिबो स्टानले बार्डविन ठीक अच्छे तापर आम टी नजर पकेबा प्रजामंडल मूवमेंट मैंने प्रजामंडल मूवमेंटा जो करद राज्य माने थिले जो प्रिंसली स्टेट्स ओडिशा रे थिले से माने आंदोलन करथिले एवं जेहेतु से माने तांकर जो राजा थिले प्रिंसली स्टेट्स दोज हु आर द किंग्स तांकरी विरुद्ध आंदोलन करथिले कारण से एक्सप्लोइटेटिव रूल
बा किछिटा जो रिप्रेसिव टैक्सेस गुरा थिला जो टैक्सेस गुरा मु लिखिछि रसद मागण बेठी बेगारी एरा सब टैक्स रो ना गुरा थिला तेणु एमाने ये टैक्स जो अधिक जुलम करथिले बा अधिक ये करथिले सेति पई प्रजामंडल मूवमेंट आरंभ होइतिला 1908 रु 1928 भितर प्रजामंडल मूवमेंट होइतिला प्रजामंडल मूवमेंट ओडिशार करद राज्य बा प्रिंसली स्टेट गुडी करे होइतिला लक्ष्य कर कि किछिटा प्रजामंडल मूवमेंट इयर मु देइछि बामंडा ढेंकानाल रे 1922 मसिया रे नीलगिरी रे 1928 मसिया रे बौद्ध रे 1930 मसिया रे तालचर रे 1932 मसिया तो सब कौन प्रजामंडल मूवमेंट यही समय सब होता कौटी कौटी होता है मन रख एवं किंतु प्रजामंडल मूवमेंट को बहुत निर्दय भाव में दमन कराइला इट वाज सप्रेस्ड रथलेसली बाय द प्रिंसली रूलर्स On 20th June 1931, Odisha Gujarat State People Association इटा मन रखिबो on 20th June 1931, Odisha State People's Association was convened at Cuttack. First session was presided over by Bhuvanananda Das. And Odisha Gujarat State People's Conference जो आंदोलन कराउतला तापे गोटे एसोसिएशन तयारी कराइतला से एसोसिएशन ना थिला ओडिशा गुजरात स्टेट पीपल्स एसोसिएशन एटा 1931 जून रे एस्टाब्लिश कराइतला एवं से एसोसिएशन रा काम थिला कि गुजरात लोक माननकु बा जो प्रिंसली स्टेट रो अधिवासी माननकु जस्टिस द ओके 37 रे गोटे सेकेंड सेशन हेतिला गुजरात कॉन्फ्रेंस रो एवं ताकु पटाभी सीतारामया ताकु प्रिजाइड करथिले एवं प्रजामंडल मूवमेंट वाज ए कैटलिस्ट इन एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ द गुजरात नेटिव प्रिंसली स्टेट्स तेणु जो प्रिंसली स्टेट थिले ओडिशा रे पाखापाखि 26 टी प्रिंसली स्टेट थिले सेगुड़िक मर्जर पई गुजरात मूवमेंट गुरा बहुत काम करथिले एवं एटा एग्रीमेंट हेतिला बट 25 टा राज्य 1 जनवरी 1948 एटा हबो 25 प्रिंसली स्टेट्स ये मु लिखि दउची 25 प्रिंसली स्टेट्स joined Odisha on 1st January 1948 एवं मयूरभंज लास्ट रे जॉइन कला सेटा देखि दियो ये डाटा रे मन रखिबो तो आफ्टर मर्जर सेतेबेले केते थिला 32 समथिंग थिला 195 स्क्वायर किलोमीटर एबे 60,129 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हे गला जेतेबेले करद राज्य प्रिंसली स्टेट रो मिसी गले एवं व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा एंड 1950 रे 1,46,46,954 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स उरा 13 थिला सेतबेले एवं जदियो मयूरभंज मिसी थिला बट सराईकला और खरसुआ जोटा झारखंड रे अछि सेटा मिसी पारी नथिला ऑलराइट सो ये जो बेसिक जिनस उरा टी मन रखी जीवो एगरा क्वेश्चन हे पारे तेणु आम डिटेल न जाई कि किछि किछि पॉइंट ऊपर फोकस करूचे जोटा तुमको हेल्पफुल हे पारे ठीक अच्छे एरिया गुरा मन रखिबो केते लोक थिले केतेटा डिस्ट्रिक्ट थिला एट द टाइम एवं 6टा डिस्ट्रिक्ट सेतेबेले थिला एबे 13टा जिला हला
So that was after the merger of princely states in Odisha. Okay. बाकी ओडिशा लेजिस्लेचर कथा हमें जो कथा होचे ओडिशा लेजिस्लेचर ऊपर किसी विशेष जानिबार नहीं जोटा तुम्हें पॉलिटी स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िछ खाली एति की मन रख ओडिशा लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल यूनिकैमरल एटा कणार गोटे हाउस यूनिकैमरल एवं ओडिशा लेजिस्लेचर कहले आम दी जन को बुझेबा गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आउ गवर्नर ऑफ ओडिशा एवं इटा पार्ट 6 रे अच्छी जमती सबू लेजिस्लेचर जमती अच्छा ये पार्ट 6 रे अच्छी जे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एवं रिसेंटली गवर्नमेंट गोटे विधान परिषद कथा आलोचना करिछि पास करिछि गोटे एक्ट यदि विधान परिषद करा जाए ताल तार सीट संख्या रहिबो 49 इफ the strength of proposed state legislative council of Odisha तो एते 49 कहीं अच्छी ये तुम्हें पॉलिटी रे मन रखिब 49 कहीं अच्छी विधानसभा विधान परिषद रो सीट संख्या कारण विधान परिषद रो सीट संख्या 49 रहिबार कारण होची विधान परिषद रो सीट संख्या विधानसभा रो सीट संख्या रु 1/3 रु अधिक हो परिबन तो माने हमर विधान सभा रो सभ्य संख्या हला केते 147 तेनु हमर 147 रो into 1/3 okay so 3 4 12 3 9 27 so 49 so maximum 47 eta 7th amendment act 1956 रे आकु 1/3 कराइछि तो सेटा मन रखिबो that is the unicameral legislature but eta करि गले bicameral हे जाई पारे एवं ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली 1935 एक्ट केतेटा सीट देइतला सेटा मन रखिबो 60 सीट्स ओडिशा विधानसभा जेतर 1936 मसीह रे तयारी हला सेते बेले विधानसभा रो सभ्य संख्या थिले 60 इटा मेन जिंस ठीक अछि एवं फास्ट प्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्री इंडिपेंडेंट असेंबली दीटा इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंट असेंबली प्री इंडिपेंडेंट माने कोन स्वाधीनता पूर्व जो असेंबली चलता दी थर बसी दी थर असेंबली गोटे 1937 ने करागला जोटा कि इलेक्शन होता 18th रु 23rd 1937 यहाँ गोटे मन रखिब केबे इलेक्शन होता एवं केतोटी सीट पे हेतिला 60 36 रे कांग्रेस 36 सीट्स एवं गजपति कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव became the first prime minister of Odisha before independence 1st April 1937 who is the first प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को आउतला एवं फास्ट हिस्टोरिक सेशन टा आरंभ होइतला 28 जुलाई एरा बहुत इंपोर्टेंट अछि
ये डाटा गुरा टी मन रख। ठीक अच्छे फर्स्ट इंडिपेंडेंट असेंबली एवं फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा बिफोर इंडिपेंडेंस मुकुंद प्रसाद दास और नंदकिशोर दास एमाने स्पीकर हेले एवं कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करथिला 39 रे एबा विशेष किछि सेंते आवश्यक नहीं तापरे कोआलिशन मिनिस्ट्री गोटे 1941 रे गठन होइतिला से कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव होइतिले एंड मौलवी अब्दुल सोबन खान टू अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गोदावरी मिश्र एंड ओके दैट इज 41 बट सेकंड असेंबली टा देखिबा सेकंड असेंबली प्री इंडिपेंडेंट सेकंड असेंबली पई इलेक्शन होइतिला लिमिटेड फ्रेंचाइज बेसिस रे 4th अप्रैल to 9th April 1946 रे एवं कांग्रेस से 36 जीतला फर्स्ट सेशन 27 मई 1940 and Harikrishna Mahtab became the Prime Minister of India, a Prime Minister of Odisha, and he also became the first Chief Minister after independence. 1948 रे Harikrishna Mahtab became the first CM of Odisha. Okay, and ये जो assembly second assembly टा 28th February 1952 रे डिजॉल्व होइतिला तापरे पोस्ट इंडिपेंडेंट बा स्वाधीनता परे प्रथम असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट्स फ्रेंचाइज अंडर रे गठन कराइतिला 1952 रे सो डायरेक्ट इलेक्शन टा फर्स्ट इलेक्शन होइतिला केबे 1952 रे एट दे दिछि मु डेट टा केतरा सीट पे होइतिला एटा मन रखियो फर्स्ट 1952 रे एवं डेट ऑफ इलेक्शन केबे केबे होइतिला एटा टे मन रखिबो फर्स्ट सेशन केबे आरंभ होला वेरी ऑस्पिशियस डे एवं कोडी होइतिला भुवनेश्वर सरदार पटेल हॉल जेटा पुराना असेंबली चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस बा आफ्टर जनरल इलेक्शन नवकृष्ण चौधरी ओके एवं फर्स्ट स्पीकर थे नंदकिशोर नंद हम नंदकिशोर दास डेप्यूटी स्पीकर मोहम्मद हनीफ फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन श्रद्धाकर सुक्का टेक ए डाटा ऑफ दैट ओके स्टूडेंट्स तो ये डाटा गुरा मु अंडरलाइन करछि से मन रखिबो स्वाधीनता पूर्व विधानसभा संख्या 60 थिला स्वाधीनता परे विधानसभा संख्या 140 है
एवं सिक्स्थ असेंबली इलेक्शन 1974 मसीह 1947 सीट्रे इनक्रीज करागला ठीक है से मेजर डाटा बाकी केबे फास्ट सेशन आरंभ होता असेंबली केबे इलेक्शन होता ओडिशा रे से डेट मन रखियो 28 डिसेंबर 1951 एवं 24 जनवरी 1952 पर्यंत इलेक्शन होता 36 डेज पर्यंत बाकी फास्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन एम हनीफ किंतु फास्ट डेप्यूटी स्पीकर इंडिपेंडेंस पूर्वर थे नंदकिशोर दास एपर्यंत 16th असेंबली हो सारी 16th असेंबली हो सारी तेणु 16th असेंबली टर्मटा मन रख 16th असेंबली जो आम कहे 16th असेंबली से 2019 रु 2024 तमाने 16 थर जनरल इलेक्शन सो फार हाउ मेनी टाइम्स जनरल इलेक्शन कंडक्टेड इन ओडिशा 16 टाइम्स बा जो असेंबली इलेक्शन 16 टाइम्स कारण 16 असेंबली चलती ओके बाकी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर फंक्शन तुम्हें जान कास्टिंग भोटा मन रख प्रिजाइडिंग अफिसर मनी बिल सर्टिफाई करते सेगुरा विशेष किसी दरकार नहीं आम पढ़ीचे पॉलिटी तेणु सेगुरा तुम्हें मन पकेब कास्टिंग भोटा मन रख मेजर कथा आउ मनी बिल को सर्टिफाई करते स्पीकर लीडर अपोजिशन आम जानीचे कौन कौन करे स्टेट एग्जीक्यूटिव ओके स्टेट एग्जीक्यूटिव रे हमर से गवर्नर आउ चीफ मिनिस्टर एगुरा काउंसिल मिनिस्टर एडवोकेट जनरल एम सब जानती एवं सेटा को स्टेट एग्जीक्यूटिव कह जाए बाकी चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट आर्टिकल मन रख 164 अपॉइंटमेंट ऑफ CM and Council of Ministers से मेन जिनस मन रख ओके नाउ 167 टा भी आइडिया रख 167 duties of the CM to governor बाकी से अनुष्ठान गुरा लक्ष्य रख केते अनुष्ठान गवर्नर एक्स ऑफिशियो हेड थांती हिंदू कुष्ठ निवारण संघ ओडिशा स्टेट ब्रांच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओडिशा स्टेट ब्रांच ओडिशा स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भुवनेश्वर ओडिशा स्टेट ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन राज्य सैनिक बोर्ड जॉन एम्बुलेंस ओडिशा स्टेट सेंटर भुवनेश्वर ये बाकी जो गवर्नर आम जहाँ पढ़ी सब से आप्लिकेबल हम ओह
ओके अच्छा ओडिशा अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एटा टिके मु कहि दूची ओडिशा अंडर प्रेसिडेंट्स रूलटा दीटा आर्टिकल ताप इम्पोर्टेंट प्रथम मन रखिबो security of the state security of the state security of the state is under the center it article 355 रे अछि सेतमें प्रेसिडेंट रूल बस तापरे प्रेसिडेंट रूल जोटा बसिबो सेटा आर्टिकल हैला प्रेसिडेंट्स रूल एटा आर्टिकल 356 आउटे आर्टिकल अछि 365 सेटा प्रेसिडेंट रूल बसिबो यदि स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई विथ सेंट्रल गवर्नमेंट तीनटा ओडिशा बट बाकी हमर इम्पोर्टेंट होछि केते केते प्रेसिडेंट्स रूल बसिछि एगुरा सब मु लिस्ट करिछि एराटे नजर करिवो फर्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल 26 फेब्रुआरी 1961 रे बसितला 23 जून 1961 पर्यंत गवर्नर थिले वाईएन सुक्थानकर दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एटाटे मन रखिवो तो वाईएन सुक्थानकर एमएसएस अंसारी बीडी जत्ती एसएस शंकर फोर्थ में बाकी लक्ष्य कर को केते केते समय बसछि 61 71 73 76 77 और 80 दीटा अछि ती नजर करो एटा को Okay, now 6th of 5th of 6th 5th HS Brar 1977 1980 okay now 61 70 74 77 76 1980 छात्र एवं बीडी शर्मा टोटल पीरियड मन रखो 2 year 11 month 2 days
ओके देन जुडिशियरी ऊपर नजर दबा जुडिशियरी सेम स्ट्रक्चर रे हमर ओडिशा स्टेट रे जहाँ सब स्टेट रे से अच्छी हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एरा सब आम जानी क्लास रे इंडियन पॉलिटी ऊपर पढ़ाऊ विभिन्न समय तो पढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अच्छी आउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीन भाग विभक्त जोटा सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट आउ आमर क्रिमिनल रेवेन्यू कोर्ट्स के ओडिशा को तीन टा रेवेन्यू डिवीजन रे गठन कराई से मन रखियो एवं ओडिशा 1916 पर्यंत अंडर कलकत्ता हाई कोर्ट थिला तापरे पटना हाई कोर्ट अंडर रे आसिला एवं 26 जनवरी जुलाई 1938 रे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गोटे रिजोल्यूशन आनिला हाई कोर्ट तैयारी करिया पई ओके तापरे जस्टिस वीरकिशोर राय कमिटी गोटे गठन कराइला एटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी 1948 रे से जस्टिस वीरकिशोर राय तार चेयरमैन थिले बाकी अन्य मेंबर गुड़ा टिके आइडिया करो सीएम आचार्य श्री विचित्रानंद दास एंड नरसिंह राव मेंबर्स थिले एमाने मेंबर्स और वीरकिशोर राय थिले तार चेयरपर्सन एवं एटा 1948 रे अपॉइंटेड होता तार उद्देश्य थिला टू रेकमेंड ए सेपरेट हाई कोर्ट फॉर ओडिशा एवं से रेकमेंड देले कि ओडिशा रे गोटे सेपरेट हाई कोर्ट तैयारी हो एवं ओडिशा रे सेकेंड हाई कोर्ट तैयारी होता एवं सीटा तांकरी रेकमेंडेशन होता तो कौ कमिटी रेकमेंड करथिला सेटा गोटे क्वेश्चन आसीपा ओडिशा हाई कोर्ट issued by government on 30th under the section 229 of the Government of India Act. It declared that from 5th day of July Odisha High Court तैयारी करा जिवो किंतु परे से डेट चेंज कराइतला तेन ओडिशा हाई कोर्ट 26 जुलाई 1948 रे इनॉग्रेटेड दैट इज इंपोर्टेंट एवं सेटा इनॉग्रेटेड बाय जस्टिस एच जे कानिया on 26 July 1948 रे हिरलाल जेसुदास कानिया जे फर्स्ट चीफ जस्टिस थिले से इनॉग्रेट करथिले ओडिशा हाई कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस थिले वीरकिशोर राय एवं अदर जजेस थिले माने जगन्नाथ दास जस्टिस आर एल नरसिंघम एंड जस्टिस आई पाणिग्राही सो काइंडली टेक ए नोट ऑफ दैट
ओके बाकी प्यूने जजेस जो अच्छे प्यूने जजेस माने अदर जजेस देन चीफ जस्टिस अन्य चीफ जस्टिस को छड़ा अन्य जज मान को प्यूने जजेस कह जाए तो ये कितने जन थे 1 2 3 4 1 2 3 and chief justice 1 and you remember who decides the strength of high court judges president बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट कथा हम कहली कि सब सेम टाइप रो कोर्ट अच्छी आम राज्य रे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरा सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट तो सेगुरा आम दरकार बाकी एगुरा टे मन रखिबो ओडिशा लोकायुक्त कथा हम टे कहबा ओडिशा लोकायुक्त रे ओडिशा लोकायुक्त कथा टे देखि दियो केबे केबे हितला बाकी डाटा उरा मु देई दोची बाकी डाटा उरा ठीक मन रखिबा ओके फर्स्ट मन रख कि ओडिशा लोकायुक्त एक्ट 2014 पास है रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स एक्ट 2015 and came into known as Odisha Lokayukta Act 2014 came into force with 7 July 2018 yes 7th July ये मन रखिबो 7 July 2018 रे लोकायुक्त एक्ट एक्टिव हैला किंतु 2014 एक्ट in which year a Lokayukta Act was passed by government Odisha 2014 but in on which date that came into existence take a note of that अच्छा इटाला एनफोर्समेंट डेट established on 28 February 2019 रे फास्ट लोकायुक्त जस्टिस अजित सिंह बाकी plus 5 members how many members are there 5 members 5 members बाकी the salary of Lokayukta is equal to the salary of Chief Justice of High Court बाकी मेंबर मानकर हाईकोर्ट जज सहित समान
ओके बाकी रिमेंबर कि चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर लोकायुक्त बहुत स्टेट अच्छी जोटा चीफ मिनिस्टर कवर होती बट ओडिशा लोकायुक्त अंडर रे चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो कवर्ड चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो कवर्ड से मन रखिए बाकी नेसेसरी डाटा गुरा मुझे ये मन रख नाउ कंपोजिशन मुझे कहली लोकायुक्त 5 मेंबर आउ जड़े चेयरपर्सन ओके द चेयरमैन रिटायर्ड और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जज हेबे अदर मेंबर्स 5 लिखाई 2 जुडिशियल मेंबर्स गोटे वुमेन गोटे शेड्यूल्ड कास्ट गोटे शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटी हाई लेवल कमिटी द्वारा अपॉइंटमेंट हेबे बाय गवर्नर्स हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस लोकायुक्त ऑफ ओडिशा गवर्नर बाकी गवर्नर विल अपॉइंट ऑफ द रिकमेंडेशन कमिटी इटा हाई लेवल कमिटी मन रखिबो इटा मेन अच्छी किए रे हाई लेवल कमिटी जो मैंने ना रेकमेंड करेंगे जहाँ को गवर्नर लोकायुक्त अपॉइंटमेंट करेंगे से गोटे माइंड रख लीडर ऑफ ऑपोजिशन रे स्पीकर ऑफ विधानसभा रे चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा और एनी जज ए जूरिस्ट अपॉइंटेड जमती आमर लोकपाल जमती एटी भी सेमती व्यवस्था कराई सो इट इज एंटी करप्शन बॉडी हाईएस्ट एंटी करप्शन बॉडी इन द स्टेट it proves it investigates corruption cases not only against the not only against the chief ministers but also other ministers and other class of peoples civil servants and others ठीक अच्छी तो लोकायुक्त उपर बढ़िया प्रिपेयर हो जाइथिबो ए जो डाटा कहली किए अच्छी कौन नहीं से सब देखियो ठीक अच्छे ये सब पर्पज लिखाई पर्पज गुरा केतल देखिबो ओके बाकी ये मन रख ओडिशा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कमिटी पे ट्रिब्यूनल आमर को पार्ट रे अच्छी ओके बहुत पिला देखुच थैंक यू वेरी मच अच्छा हु कैन से मी दैट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच पार्ट ट्रिब्यूनल को पार्ट रे अच्छी कैन एनीवन आंसर ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड आई होप हु कैन से व्हिच पार्ट कंटेन्स ट्रिब्यूनल्स yes okay pdf will be uploaded by the person concerned yes because it is xiv you are sure start of baba montu it will start xiv केंद्र कौच xiv कुंतला xiv टा पूरा यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज xiv a not xiv a ओके xiv a सेटा ट्रिब्यूनल टा कोदरे xiv ए एटा को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला 42nd अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एवं एथरे दी प्रकार ट्रिब्यूनल कथा अछि गोटे हला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ गोटे हला अदर ट्रिब्यूनल्स गोटे आर्टिकल 323 ए आ गोटे आर्टिकल 323 बी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टा एटा 323 ए अंडर अच्छी मन रहा ओडिशा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1986 मसीह सेटअप होता स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तैयारी to for quick redressal of grievances of the state government employees regarding their service matters. State Administrative Tribunal कौन पे तैयारी कराइतला न to deal with the service related matter. State government employees मान करो तो तुम्हें ASO रे join करिवो तल तुम्हारा service related जा dispute सब सेटा tribunal deal करतला. But पिला माने tribunal टा बे abolish ହେଇଛି. एटी फास्ट आगे मन रखिबा abolish 2015 बाकी इनफॉरमेशन तो ये अच्छी 2015 रही
एवं ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच थिला भुवनेश्वर मुख्य तापर कटक रे गोटे थिला बरमपुर गोटे थिला संबलपुर एगुड़ा मन रखता केबे आबोलिश होता केबे एस्टाब्लीश होता कौटी ब्रांच थिला बस बाकी काम कथा तो जानिछ कौन कर से ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान डिस्प्यूट डील करथला ठीक अच्छे ओके बेसिक फैक्ट गुरा मन रखी जीव बेसिक फैक्ट गुरा मन रखियो जोड़ा क्वेश्चन हो पारिबो तापर देखिबो अन्य कथा पछे देखिबा ओके एमसीक्यू क्वेश्चन हबो तेणु सेति पई कोन कोन क्वेश्चन हो पारिबो तापर फोकस करिवो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मु कहले अबोलिश 2015 रे तापर पिलाने ओडिशा जुडिशियल एकेडमी गोटे अछि जोटा हमर कटक रे अछि जोटा 2003 रे सेटअप होईछि एटा जुडिशियल ट्रेनिंग जुडिशियल एजुकेशन पई तयारी कराइछि जो मन जुडिशियल ऑफिस रे जॉइन करिवे तांको ट्रेनिंग पई एवं जुडिशियल शिक्षा पई कटक रे एटा तयारी कराइछि एटा मन रखियो 2003 टा मेनली मन रखिबो ओडिशा जुडिशियल एकेडमी ठीक अछि बाकी ओडिशा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 रे ओस्ला ओसा सालसा ओसालसा 1996 रे लोक अदालत पे तैयारी करा जाए ओडिशा रे परमानेंट लोक अदालत 18 टा अछि 18 परमानेंट लोक अदालत ठीक अछि एरा देखिबो टिके 18 परमानेंट लोक अदालत हाँ बाकी ओस्लास ओसालसा जो को नालसा सालसा हाँ मेरा सब कौन माने लोक अदालत तैयारी करिया पे तैयारी कराइछ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एवं सब तैयारी कराइछन्ती माने लोक अदालत गुरा तैयारी करिकि लोकन को जस्टिस देवा पे देयर आर 18 परमानेंट लोक अदालत्स इन ओडिशा एंड सालसा केबे सेटअप होइतला एटा भी मन रख 1996 रे सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट अथॉरिटी ओके तार पैट्रोन इन चीफ जोड़ा पड़ो पैट्रोन इन चीफ तार मुख्य पैट्रोन इन चीफ तो कहती पैट्रोन इन चीफ हु इज द पैट्रोन इन चीफ ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन ओडिशा दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओडिशा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट सेमती नालसार पैट्रोन इन चीफ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया okay kindly take a note of this ठीक अच्छे बाकी रहा तुम यहाँ ओसालसा परमानेंट लोक अदालत कथा मन रखिल तापर पंचायत राज उपर किसी डाटा नवा पंचायत राज ठीक अच्छे बाकी ओडिशा रे प्रथम पंचायत राज एक्ट पंचायत राज को इंग्लिश रे कौन कहते पंचायत राज को इंग्लिश रे हमें कौन कहबा ओके पंचायत राज को इंग्लिश रे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एवं एटा 1948 रे ओडिशा रे स्टार्ट होइतला 1948 रे ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट
बाकी 3 टायर पंचायत जोटा कराइतला 1961 रे ता पूर्व गोटे ओडिशा अंचल शासन एक्ट कराइतला नवकृष्ण चौधरी समय रे जोटा ओडिशा अंचल एक्ट कहउतला एथिरे जिला परिषद और अंचल बेली गोटे 2 टायर स्ट्रक्चर कथा कहइतला बलवंत राय मेहटा पूर्वर ओडिशा रे ऑलरेडी पंचायत राज कथा कह जाइतला एक्ट हेइतला किंतु सेटा दैट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस एवं ऑन द बेसिस ऑफ बलवंत राय मेहटा रिकमेंडेशंस ओडिशा adopted panchayat raj and you know कि Rajasthan became the first state to adopt 3 tier panchayat and Odisha adopted 3 tier panchayats in 1961 by amending the Odisha Panchayat Act 1948 48 को अमेंड करके 1961 रे 3 टायर सिस्टम टाको इंट्रोड्यूस कराइतला ओके एवं न्यू डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज 1962 रे तयारी कराइतला एटा मन रखियो पंचायत राज विभाग ओडिसा रे केबे तयारी कराइतला मिनिस्ट्री एवं दैट वाज ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ बिजू पटनायक बाकी एबे ओडिशा जिला परिषद एक्ट 1991 अमेंड कराई कि करा जाइछि ओके सेटा लक्ष्य करो Okay, so Odisha Grama Panchayat Act, Odisha Grama Panchayat 1964 and Odisha Panchayat Samiti Act 59 were amended. In 91, 92 and 93, the Odisha Jilla Parishad Act was also enacted to constitute Jilla Parishad at district level. अच्छा ये जो 33% रिजर्वेशन कथा हमें कथा उचे 33% रिजर्वेशन कथा that was extended to 50%. It have note करतिबो 50% in 2012 panchayat election. Okay, first time 2014-12 panchayat election रे एटा इंट्रोड्यूस करता है बुझी पारलो यदि क्वेश्चन पचारिबो प्रथम ओडिशा केबे 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इंट्रोड्यूस करथिला इन पंचायत्स that was in 2012 पंचायत इलेक्शंस 2011 रे ओडे बिल आसला 1964 पंचायत एक्ट को अमेंड करा गला एंड ओडिशा became one of the leading states to provide 50% reservation to women for the first time in 2012 panchayat elections first time तागुर देई नथिला तागुर 33% थिला एवं एबे तकू कोन कला 50% कला को इलेक्शन नु कला 2012 elections that is most important
Got it? Got it or not? এটা মনে রাখো 2012 ইলেকশনে করা গলা বলি ওকে ওকে 2012 ইলেকশনস and act মনে রাখিব প্রথম কেবে হইতিলা 3 টায়ার কেবে আসিলা এরা টি মনে রাখিব 33% थिला एक्ट अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट अंडर ओके बाकी एबे जोटा हमें देखिबा मन रखियो जोटा 5 फेजेस रे इलेक्शन होईची 5 फेजेस रे पंचायत इलेक्शन एटा डाटा रखियो पंचायत इलेक्शन 2022 टा 5 फेजेस रे होईची एंड एटा होची 16 18 20 22 24 फेब्रुआरी डेट रो मन रखिबो एई डेट रे पंचायत इलेक्शन होईची नेत्रे इलेक्शन 6794 ग्राम पंचायत में ही इलेक्शन ए वर्ष 6794 ग्राम पंचायत तापरे 853 जिला परिषद सीट्स और 91916 वार्ड्स 2022 इलेक्शन रे डाटा गुरा मन रखियो टिके केतेटा फेज रे हिची एवं केते केते डेट रे हिची एवं केते केते ग्राम पंचायत पे इलेक्शन हिची केतेटी जिला परिषद पे हिची एवं केतेटी पंचायत बा हमर जोटा कहूची कोन केतेटा वार्ड्स पे हिची बाकी ब्लॉक तो ये ट्राइबल ब्लॉक टा 118 अच्छी ट्राइबल ब्लॉक्स और रेस्ट ब्लॉक है डेवलपमेंटल ब्लॉक्स गुरा तो पंचायत समिति पे से सब मन रखियो ओके तो टेक ए नोट ऑफ दिस ठीक अच्छे बाकी रहा हमार पंचायत डाटा तापरे हमार जोटा अच्छी म्युनिसिपल डाटा जोटा अच्छी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जोटा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन अर्बन इलेक्शंस म्युनिसिपालिटी इलेक्शंस
म्युनिसिपालिटी इलेक्शन एटा मार्च 24 डेट गोटे डेट अच्छी वन फेज बाकी 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे ही और 59 एनएससी पे ही एवं म्युनिसिपालिटी 2022 22 for the first time 50% reservation for women is provided in municipalities, urban bodies, ULBS, urban local bodies for the first time. Then 2022 election रे municipality रे प्रथम थर पे दिया गला 2012 रे पंचायत पे प्रथम दिया गला ओके सो एटा मेजर जिनिस मन रखियो मेजर एस्पेक्ट रे पढ़ी पारे कारण प्रोबेबल कारण जदि से समय इलेक्शन क्वेश्चन आसी नथिबो त एटा इंक्लूड करा जाई पारे ओके ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स इज द क्लास गोइंग ऑन स्मूथली और एनी प्रॉब्लम we are going discussing on the main points only because it will take lot of time, so therefore we have shortened it. Are you getting the points, all of you, or any problem? Okay. Anyone, any problem, you can type here, mention here. So these are the data. Baki total number of urban bodies kete hela? Total number of urban bodies hela 109. UL 109. Last election to 94 urban local bodies jahitla. 94 नर्बन लोकल बॉडीज जाइतला बट एबे सेटा 109 लोकल बॉडीज पे इलेक्शन है टोटल ओके सो दैट इज द थिंग्स एवं एटा मन रख कि ओडिशा रो जनसंख्या इंडिया रो तो हमर 31% population urbanized population living in urban area in the state stood at 16.18 एटा मन रखिबो लास्ट सेंसस रे ओडिसा रे अर्बन पॉपुलेशन संख्या 16.68 एटा बहुत इंपोर्टेंट डाटा अछि as compared to the what as compared to India रे अर्बन पॉपुलेशन 2011 रहउछि 31.16 आउ इन ओडिशा रे अर्बन पॉपुलेशन 2011 सेंसस रहउछि 16.62 एवं इट इज एट द लोएस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री 31st रैंक रे अछि ओके सो दैट इज आल्सो ए पॉइंट टू रिमेंबर 31st in the list of most urbanized states in the country actual in urban population रे 11th rank 31st rank होउछि in the most urbanized country रे किंतु पॉपुलेशन अनुसार 11th रैंक रे अछि इन द स्टेट्स ऑफ लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन ओके पॉपुलेशन अनुसार 11th बट मोस्ट अर्बनाइज्ड अनुसार 16 पॉइंट ओके सो यू हैव रिटन समथिंग इलेक्शन कम अंडर डीपीएसपी सेति पई सबु लोकल अर्बन बॉडीज रे इलेक्ट हो कंपल्सन रुहे कही परिबा ना इलेक्शन डीपीएसपी अंडर रे हुए नि
प्रसाद अच्छा इटा इलेक्शन डीपीएसपी अंडर इलेक्शन पंचायत और म्युनिसिपालिटी 243 के अंडर रे करा जाए इलेक्शन कमिशन करे कंपलसरी इटा 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे इलेक्शन टा कंपलसरी कराई छि द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू कंडक्ट इलेक्शन एवरी 5 years अंडर आर्टिकल 243 के रे अच्छी पंचायत पार्ट रे तेणु यहाँ डीपीएसपी रे इलेक्शन नहीं बाबा डीपीएसपी रे केवल पंचायत राज आर्टिकल 40 रे थिला एवं सेटा वर्तमान टू पार्ट आईएक्स को उठी आसी ओके सो डोंट थिंक दैट इलेक्शन इज मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी डीपीएसपी टा इलेक्शन रे नहीं इलेक्शन टा डीपीएसपी रे नहीं एटा पार्ट आईएक्स रे 243 के रे अछि and remember election is compulsory every 5 years एवं जदि in case a panchayat is dissolved earlier then election will be conducted if the remaining period is more than 6 months and the newly constituted panchayat will remain in power for the remaining period of the term simultaneous election करा जाए and who conducts the election the state election commission of India commission of Odisha एंड बर्तमान आदित्य प्रसाद पाढ़ी अच्छा चेयरपर्सन तार एवं सब मन रखिए अच्छी आपरे देखा 11th जो स्टेट इलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे तो अर्बन पॉपुलेशन मन रख ना कंपोजिशन ऑफ अर्बन बॉडीज कही हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एटा हमर 3 प्रकार म्युनिसिपल बॉडीज अच्छी अर्बन रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल यस एसईसी यस यू आर राइट municipal bodies, municipal corporation, municipalities and NSCs मु कहली केतटा इलेक्शन केतटा म्युनिसिपालिटी पे इलेक्शन हेतला 47 तीनटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे हेची संबलपुर बरहमपुर एक कटक भुवनेश्वर और बरहमपुर ए तीनटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे इलेक्शन हेतला एवं 47 म्युनिसिपालिटी पे इलेक्शन हेची एंड 59 एनएससी पे इलेक्शन है 3टा प्रकार सहर या छड़ा ओडिशा रे टाउनशिप अच्छी प्लस पोर्ट ट्रस्ट भी अच्छी किंतु ओडिशा रे किछि कैंटनमेंट सिटी नहीं जोटा हम मिलिटरी टाउन्स कहूचे देयर आर नो कैंटनमेंट सिटीज इन ओडिशा ओके बाकी अर्बन मिनिस्ट्री काम करूची मिनिस्ट्री फंक्शन थ्रू द फॉलोइंग डायरेक्टरेट्स डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग पब्लिक हेल्थ बाकी बहुत सारा स्कीम है मन रख अमृत आधार आहार स्कीम टा 2015 सब अर्बन एरिया पे स्कीम कराई अमृत अटल मिशन स्वच्छ भारत मिशन जोड़ा स्टार्ट सरले 2014 बाकी आहार स्कीम टा गोटे अच्छी बाकी बहुत सारा सहर रे चलची बहुत सारा सहर को स्प्रेड करची इट्स ए मील स्कीम फॉर द for urbanites who get meals at ₹5 at ₹5 ahar amrut smart city mission आवास योजना गोटे अच्छी आवास योजना 2015 लॉन्च होता हृदय स्कीम रे पूरी जाइतिला हृदय स्कीम गोटे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो 12 सिटीज जाइतिले इंडिया रो पूरी से हृदय स्कीम रे अच्छी ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द स्कीम्स टिके स्कीम ऊपर नजर पकेबो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन ओडिशा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन ओडिशा yes you are well prepared all of you very good proceed both encouraging your participation is quite encouraging all of you are attending my class and also listening to me carefully giving your valuable comments that's a great thing that I'm getting out from all of you thank you very much for your kind participation keep us watching and inspire us to do more for you and to enable our students, Odisha students, to qualify not only in the state examination but also in the central examination. We are planning to add more and more ODIs. The major objective of Vanik is to add
or to enable more and more Odia students to qualify in the central sector services, including all India services like IAS, IPS. So be with us. We will guide you to the top. Okay. So your participation is quite satisfying, quite encouraging also. Okay. Maximum numbers of you are participating in my class and giving me encouragement, giving me hints to proceed further and to share my knowledge with all of you. Okay. So that is the things. So we have come across. So we have taken a brief tour, a brief note on Odisha Polity, most of important things, and this is also important part, constitutional, extra constitutional bodies in Odisha. Okay, we shall start this, but I hope ki there will be a requirement of another class on this Odisha Polity, because we will complete the rest part of the theory and also discuss some important questions on that. So if possible, the next week there may be a class on this topic. So spend some time with me next class, next week. I will share some important questions with answers to all of you on Odisha Polity, which is feasible, which is maybe expected in the coming examinations. Yes, preparation तो है पर हो ही रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा, ओके ओके, हो जाएगा. What is your name? Alice Mistra. Yes, Mistra. Don't lose hope. It will be there. Don't worry. Okay. So सबर का फल मीठा होता है. Patience has its own price. Don't worry. Continue with all vigor, all जोर से चलो, जल्दी कामयाबी आएगा. ठीक है. ओके. सो स्टेट इलेक्शन कमिशन जोटा हमें कहूले, स्टेट इलेक्शन कमिशन कथा जोटा कथा होतले, स्टेट इलेक्शन कमिशन is constituted under two articles, 243K in part IX and 243 ZA in part IXA. Two parts re अछि. सेठी अछि 243 243K और एटा होछि 243 ZA. तमना हम कहिबा स्टेट इलेक्शन कमिशन इज ए constitutional body because it is established under these two articles, and state election commission is a single member body, and the appointment is made by the governor. The governor appoints the state election commissioner, but he is removed by the president in the same manner as a high court judge is removed. Got it? So that is the first things. The state election commissioner is appointed by the governor but removed by the president in the same manner as a high court judge is removed. Got it? But the state election commission in Odisha was established on 27th May 1994. 27th May 1994. Okay, Shiva Shankar, you are doing degree, very good. But still you are interested in taking classes. Yes, very good. So the earlier you start, the sooner you get. So ये जो जिद्दी तुम मनर सब रोची जो जिद्दी अच्छी सेटा तुमको बहुत हेल्प करिवो. Associate रुओ वाणिक सहित more and more. Watch our classes, watch our YouTube sessions, join us. And you will definitely translate your dream into a reality. Okay? Continue karo. Be associated with us. Continue to be associated with Vanik, the mega institution. It is a great institution in Odisha, जोटा कि पिलामान पे काम करूची
एवं सब बेले चेष्टा करुच्ची कि ओडिया पिला माने केमती बहुत संख्यार सरकारी स्तर रे चाकरी करंतु सेंट्रल सेक्टर रे स्टेट सेक्टर रे आम पिला तो रहिबे बट सेंट्रल सेक्टर रे भी ओडिया पिला अधिका संख्यार आसंतु सेतिपई बी इन टच विथ अस ऑलवेज बी इन टच विथ the besides panchayat election you see panchayat election is conducted by the state election commission but the Lok Sabha election and assembly election in the state is conducted by the election commission of India. There are two different bodies. Election commission of India which article election commission of India article 324 re it conducts Lok Sabha elections and Lok Sabha elections and assembly elections, MLA election and MP elections. But state election commission of India conducts panchayat election and municipality elections. ठीक है? Okay, before that there was nobody, there was election commission of India that conducted the body. The before state election commission or before 73rd amendment act elections were held and that was conducted by election commission of India but now it is being conducted by the state election commission. Okay, and remember the past state election commissioner of Odisha Devendra Kumar Mishra and the present election commissioner honorable election commissioner is Sri Aditya Prasad Padi, retired bureaucrat, and he is the election commissioner of India. And this is the elections of the country, election in the states. So the state election commission conducts elections to elections to municipalities and urban rural local bodies the panchayats and you remember ki Odisha has 3-tier system. Odisha has 3-tier system and another thing I told you that there are scheduled areas. Okay, next class re mu se scheduled area kotha kohibi. Scheduled area amro ketoti state re achi but for the timing remember one PESA Act PESA Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996 रे कराइतला जोतरे पंचायत रो प्रोविजन गुरा 73rd Act रो प्रोविजन गुरा शेड्यूल्ड एरिया रे ये कराइतला मु शेड्यूल्ड एरिया लिस्ट तुमको नेक्स्ट क्लास रे देबी बट एबे खाली मन रख शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बा शेड्यूल्ड एरिया जोटा अछि शेड्यूल्ड एरियाज इन ओडिशा एटा 13 डिस्ट्रिक्ट रे अछि 13 डिस्ट्रिक्ट रे शेड्यूल्ड एरिया अच्छी 6टी that is yes 6 fully plus 7 partially. I will tell you in the next class कि केते केते जिल्ला रे शेड्यूल्ड एरिया अच्छी फुल्ली कोगुरा और शेड्यूल्ड एरिया कोगुरा बट से पेशा एक्ट को मन रख पेशा स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज. So directly the 73rd Amendment Act is not applicable to panchayats, not applicable to panchayats. It is indirectly applicable after PESA was enacted. Then PESA ta theory itla scheduled area manaku implement kariya pai theory karaitla. So now it is being applicable in 13 districts both of fully and partially areas. ठीक है बोला ने. So election commission कथा देखिले next class रे हमें आउ जो rest part अच्छी complete करिबा एवं तुम्हें किसी समय दबो जो next week रे जो schedule आसीबो सेतरे तुम्हें किसी समय दबो सेतरे हमें सब question declare कर दबो जो discussion करिबा answer question answer भी करिबा. ठीक अछि. So should I end the class? Should I end the class now? And we'll be waiting for all of you in the next class. Next class आ जाना complete करेंगे जो सब है बाकी पार्ट
उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करते, एंड करते। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास वी शैल बी starting with the rest part of the Odisha polity with important questions. Thank you all.